सो यस मेट माई एजुकेशन आउ गोटे नुआ भिडियो आपण मानक समस्त को स्वागत। जमती कि आपण मैंने जानते यही चैनल पर डे किछिटा MCQs डिस्कसन होची रिगार्डिंग आपणकर OTET एग्जाम CTET एग्जाम एंड CST एग्जाम एंड आगु को जो आसुथिबा अपकमिंग JTC जूनियर टीचर एग्जाम और आपण मैंने जदि DLED बा BEd पे प्रिपेयर करूछंती तो सही रिगार्डिंग क्वेश्चंस ओवरऑली आधे डिस्कशंस हम। तो जमती कि आपण मैंने जानी थे जदि आपण मैंने ट्रेनिंग नहीं आपण मानकर किछिटा धारणा थिबो जे पियाजेट हुंतु बा भाइगोट्स्की हुंतु बा कोलबर्ग हुंतु से माने किछिटा तांकर स्टेटमेंट्स देइचंती कॉग्निटिव डेवलपमेंट सकासे हो बा पिला मानकर ओवरऑली स्कूल करिकुलम भितरे बा सोशलाइजेशन उपरे जहाँ भी किछि सी देइचंती सेमानकर मंतव्य ता रिगार्डिंग किछिटा टॉप MCQs अच्छी आपण मानक पई वीडियो को भल भाव देखंतु एंड जदि वीडियोटी आपण मानक भल लागे ताले वीडियोटी आपण माने लाइक करंतु अन्य मानक सहित शेयर करंतु जो माने एस्पिरेंट अछंती एंड निश्चित रूप से एते परिश्रम करी जेहेतु म आपण माने क्वेश्चन आनुची तो निश्चित रूप से चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करंतु। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी with reference to Piaget's stages of cognitive development match the following कोटा को करेक्टली मैचिंग कले एटा ठीक रहइबो सेंसरी मोटर संगे प्री ऑपरेशनल संगे बा कंक्रीट ऑपरेशनल संगे बा फॉर्मल ऑपरेशन संगे तो आपण माने जेंति जानि थिबे जेमती आपण माने जानि थिबे जे पियाजेट तांकर चारोटी स्टेज रे कैटेगराइज्ड करिसेंती कॉग्निटिव डेवलपमेंट को तो निश्चित रूप से आपण माने मैच करंतु कोटा का सहित ऑप्शंस रहिला आपण मानक पई देखो क्वेश्चन देखो यदि आपण थिंक लॉजिकली एंड अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स तो निश्चित रूप से ये रिलेट क्या करुच्ची ना ऑप्शन सी को हाँ कि सॉरी ऑप्शन बी नुहे ये ऑप्शन ए को रिलेट करुच्ची। नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी नेक्स्ट अच्छे आपण मानकर देखंतु फॉर्मल ऑपरेशंस रे कौन हुए पिलार recognize self as an agent of an action and begin to act intentionally तो आपण मोर 4 नंबर ऑप्शन टा कहा सहित कनेक्ट हो ना बी सहित। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि देखंतु डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम ऑब्जेक्ट आपण मानकर ऑप्शन सी टा कहा सहित कनेक्ट करूची ना सेंसरी मोटर स्टेज सहित बुझियला आ प्री ऑपरेशनल ताले कहा कनेक्ट करिवो ना जोटा बोलिना थिंकिंग इज स्टिल इगोसेंट्रिक हैज डिफिकल्टी टेकिंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स तो निश्चित रूप से आपण मानकर ऑप्शन नंबर 3 टा ही करेक्ट आंसर रहइबा। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि डेवलपमेंट प्रीसीडेट्स लर्निंग इज ए स्टेटमेंट एट्रिब्यूटेड टू ए स्टेटमेंट किए देइथिले डेवलपमेंट प्रीसीडेट्स लर्निंग जॉन डे भाइगोट्स्की पियाजेट एंड बर्नर देखंतु ए स्टेटमेंट पियाजेट देइथिले डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स अकोमोडेशन माने कोन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतरे अरेंजमेंट ऑफ परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव
information into meaningful patterns, equilibrium between previous knowledge and new knowledge, adjusting to new ways of behaving and thinking by modifying existing cognitive structures, finding the matching between existing and cognitive structures and the environmental needs as they arise. देखो accommodation माने Piaget को मतरे कौन ना adjusting to new ways of behaving and thinking by modifying existing cognitive structures. ये ऑप्शन ठीक रहिबो तांकर कारण accommodation Piaget को मतरे आपण माने जो थ्योरी पढिथिबे ने जानिथिबे मु जानि परथि आपण माने आंसर भी देई परथिबे सटीक भाबरे. नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन कोन अछि. द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय किए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रो कांसेप्ट देथिले पियाजेट ना भाइगोट्स्की ना कोलबर्ग ना एरिक एरिक्सन किए देथिले. देखंतु जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट निश्चित रूप से आपण समस्त जानते जे पियाजेट देथिले. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि क्वेश्चन. The difference between what the child can do now and what the child can do with adult guidance or that of more capable peers is known as area of optimal development, region of cognitive development, zone of proximal development, and concept of trivial development. देखो the difference between what the child can do now and what the child can do with adult guidance एटा जो डिफरेंशिएट होची ना एटा आपनकर कोथरे होची ना जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भितर होची. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि क्वेश्चन. With reference to Piaget's key ideas, the realization that objects or sets of objects stay the same even when they are turned around or made to look different is defined as आको कौन कह जाए डी सेंट्रेशन ना क्लासिफिकेशन ना क्लास इंक्लूजन ना कंजर्वेशन. कौन देइछि ना ऑब्जेक्ट्स और सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टे द सेम इवन व्हेन दे आर टर्न्ड अराउंड और मेड टू लुक डिफरेंट. एटा कहार कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से एटा होची आपण मानकर कंजर्वेशन नो कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन कोन अछि. With reference to Piaget's key ideas, the process by which persons take material into their minds from the environment, which may mean changing the evidence of their sense to make it fit, is called ako kon कह जाय fixation ना assimilation ना accommodation ना adaptation. देखंतु ए प्रोसेस को कौन कह जाए ना assimilation. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि आकु किछि बुझिबार आवश्यकता नै आपण माने पढ़ी थिबे तो ता रिगार्डिंग जहाँ भी एमसीक्यू अछि मु तार क्वेश्चन देखुछि एंड आंसर आपण मानक कहूछि. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि इन कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलोड बाय पियाजेट. कंस्ट्रक्टिविज्म रे पियाजेट को कोन स्टेटमेंट्स थिला. एजुकेशन इज ए बिहेवियरिस्टिक इन नेचर. Children participate passively in learning. Education is teacher centered. Education is child centered. देखो मु प्रीवियसली भी आपण मानू कही जेकोसी भी मनस्तत्वविद आसतु बा साइकोलोजिस्ट आसतु निश्चित रूप से माने सब बेले पिला को ही गुरुत्व देथिबे तो निश्चित रूप से चाइल्ड सेंटर्ड ही आंसर रहबा. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि इन व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेट डू चिल्ड्रन डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ना प्री ऑपरेशनल स्टेज ना सेंसरी मोटर स्टेज. देखंतु आर सठिक आंसर रहिबा आपनकर कोन चारोटी स्टेज देछि आपनकर. सठिक आंसर कौन रहिबो ना सेंसरी मोटर स्टेज. बुझियला निश्चित रूप से जानी थिबे कहिबार विशेष आवश्यकता नहीं.
को स्टेज ना सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि व्हेन सोनू वाज ए 6 months old, he played with a teddy bear. But when his view of the bear was blocked, that is, he could not see the bear, he did not look for it. Now, Sonu is 18 months old and searches for the teddy bear when he cannot see it. This shows in Sonu the presence of the quality of what? Assimilation, adaptation, na self differentiation, na object permanence. देखो तो आपण माने ऑब्जेक्ट परमानेंस विषय भी पढ़ी थे तो निश्चित रूप से यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस को ही जीव जिते सी गोटे ऑब्जेक्ट विषय में तार न देखी तार से जिनसा मन पड़े धारणा आसूँ निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट परमानेंस को ही जीव। नेक्स्ट देखा ए 1 year old चाइल्ड इज लाइकली टू लर्न समथिंग इन द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इफ कौन ना पेरेंट्स और अदर्स डू नॉट इंटरफियर द टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन द चाइल्ड कैन डू एलोन द चाइल्ड हैज mastered the skills necessary, the child needs little or no help from anybody. A 1 year child is likely to learn something in zone of proximal development. এটা কো অপশন যাব parent or others do not interface নাই the task is more difficult than the child can do alone. Yes এটা হই পারে the child has mastered the skills necessary na tal zone of proximal development asio kon pai the child needs little or no help from anybody na e jinsa bhi nuhe to निश्चित रे ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर रहबो। नेक्स्ट देखिए कोन अछि which one of the following is not a basic feature of pre operational period according to Piaget? Transformation na centration na conservation na decentration कोटा गोटे बेसिक फीचर कहार ना प्री ऑपरेशनल पीरियड रो नुहे देखो ये देछि को नॉट देछि बुझियला तो निश्चित रूप से आंसर आपनकर कोन रहिबो कोटा गोटे नुहे ट्रांसफॉर्मेशन थाए सेंट्रेशन थाए कंजर्वेशन भी थाए डिसेंट्रेशन न थाए विकेंद्रीकरण न थाए जोटा कि आपण ओडिया रे कहि परिबे। नेक्स्ट देखि कोन अछि कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज ए फॉलो अप ऑफ पियाजेट्स थ्योरी वाज ए रिजल्ट ऑफ कोन कोलबर्ग का थ्योरी मोरल डेवलपमेंट रे एज ए फॉलो अप पियाजेट्स थ्योरी वाज रिजल्ट ऑफ कोन ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शन creating game like situation creating moral dilemmas for people talking to parents। देखो कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी फॉलो करे पियाजेट का थ्योरी को एंड सेटा कौन रिजल्ट दिए ना क्रिएटिंग मोरल डिलेमास फॉर पीपल आप जानी थ्योरी पढ़ी थे तो विशेष आज बुझे आवश्यकता नहीं सी जहाँ कहते ही खाली क्वेश्चन आमको इम्प्लीमेंट करार अच्छी। नेक्स्ट देखा अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट व्हिच लेवल इज मोरालिटी एक्सटर्नली कंट्रोल प्री कन्वेंशनल लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ना नन ऑफ द एबव आंसर कौन रही आपंकर ना प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्वेश्चन which one of the following is not a part of a stage proposed by Kohlberg in his theory of moral development? कौन ऑप्शन अच्छी सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप विथ अदर्स सोशल कंट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। देखंतु कोलबर्गर मोरल डेवलपमेंट उपरे जहाँ भी किसी रहिला कौन रहा ना जो जो स्टेज रहा कौटा नुहे या भितर पचार कौन नट आप सब क्वेश्चन नोट देखते देखो सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड रिलेशनशिप विथ अदर्स फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भी किंतु सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड गाइडलाइंस एंड सोशल राइट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स एटा रहिबो नहीं तो निश्चित ऑप्शन नंबर 3 टा ही करेक्ट आंसर रहिबो जेतु सी नो कथा पचारि नॉट कथा पचारि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी Samira returned the book she took from Maltese bag because she was afraid of being punished if she was caught. This illustrates Kohlberg's co-principle বা co-level ତାଙ୍କର ପ୍ରି କନଭେନସନାଲ ଲେଭେଲ ନା କନଭେନସନାଲ ଲେଭେଲ ନା ପୋଷ୍ଟ କନଭେନସନାଲ ଲେଭେଲ ନା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଲେଭେଲ निश्चित रूप से तार भयर वातावरण सृष्टि होची सी किछि दंड पाइबो पनिशमेंट पाइबो तो प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी
क्वेश्चन children at school follow the code of conduct decided by the teachers which level of moral development is shown here कौन ना प्री कन्वेंशनल ना कन्वेंशनल ना पोस्ट कन्वेंशनल ना नॉन ऑफ द अबव देखो एटा कहा अंडर जीव ना पोस्ट कन्वेंशनल अंडर जीव कहीं ना जो कोड ऑफ कंडक्ट बाय द टीचर हो जाए पिला फॉलो अप करुच्ची नेक्स्ट देखा कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए टीचर कैन instill moral values in children by giving strict instruction on how to behave, involving them in discussions on moral issues, laying down clearly rules of behaviors, giving importance to religious teaching. देखो पिला मानू जिते आप डिस्कसन्स बसइबे से जिते आप कौन से एक्सप्लोर करने देते तो निश्चित रूप से भल रही निश्चित ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर रही नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी Which of the following is the characteristics of Kohlberg stages of moral development? कौन ना universal sequences of stages across all cultures. Stages proceed in a non-hierarchic manner. Variable sequences of stages. Stages are isolated responses and not a general pattern. कौन रही आपन आंसर यार कोटा गोटे कोलबर्गर मोराल डेवलपमेंट स्टेज रा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना जी ऑप्शन अच्छी या भितर आपंकर यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल द कल्चर्स करेक्ट आंसर रही नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी शिशिर मेहता डजंट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which wastes millions of rupees in unnecessary expenditure on welfare measures to garner votes. He is probable in which state of Kohlberg stage of moral development? Law and order morality, social contract orientation, universal ethical principle orientation, and none of the above. देखो तो पूर्व भी कही ethical principle orientation option number 3 ही यार करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children: social, hereditary, moral and physical. निश्चित रूप से Vygotsky जितेबाला भी जो कथा कहते सोसाइटी को नहीं कहते तेणु से सोशल कथा ही कही नेक्स्ट देखिए Which of the following statements may be attributed to Vygotsky? Emotions vary from child to child. Culture and language play a significant role in child development. Children think illogically. Children think in different ways from one another. देखो सब बेले Vygotsky सोसाइटी कथा कही तो कल्चर कथा तादरे निश्चित आसो तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए Vygotsky proposed that child development is कौन a combination of accommodation and assimilation, a result of social interaction due to genetic components of a culture, a product of formal education. पुणी आसला Vygotsky कथा तो आखि बुझी सोसाइटी कथा नेबे सोशल इंटरेक्शन नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्वेश्चन Vygotsky theory implies, after initial explanation, do not support a child in solving difficult questions. तापर कौन देला ना child will तापर कौन देला ना child will learn best in the company of children having IQ lesser than in his or own, collaborative problem solving na individual assignment to each student. Vygotsky theory कौन इम्प्लाइज करे सोसाइटी कथा तो एम्फासाइज करे ता सहित से समस्त को नेकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को भी मोटिवेट करे तो निश्चित ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर रहेगा तापर कौन देला as a teacher who firmly believes in the social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students? कौन ना standardized test, fact based recall questions,
ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कौन आंसर्स रहबा आपनकर क्वेश्चन डाउथरे देखि दियंतु एना कहिथिले पूर्व समस्त को नहीं कि एकाठी करिकिरी काम करने को सी कहते तो निश्चित कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट सहित आम जो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रिब्यूटेड टू किए कहते पियाजेट ना पैवलव ना कोलबर्ग ना स्किनर चिल्ड्रेन एक्टिव है निजर ज्ञान को संगठित करे संगठन करे तो पियाजेट ही कहते तो ऑप्शन ही करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए according to Piaget at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract prepositions को स्टेज करे कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल ना सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल निश्चित रूप से आप पढ़ी थे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस रे नेक्स्ट देखिए the stage in which a child begin to think logically about objects and events is known as sensory motor stage na formal operational na pre operational na concrete operational आपको किसी बुझीबार आवश्यक नहीं पढ़ी थी एटा निश्चित कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सहित ही जीव नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ ए चिल्ड्रेन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय कोलबर्ग एरिक्सन ना स्किनर ना पियाजेट पियाजेट ही कहते नेक्स्ट देखिए Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children social moral hereditary physical आपन कहितली Vygotsky कथा जिते बेले भी आसे सब बेले सोसाइटी कथा आसे तो सोशल कथा ही जीव नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी according to Piaget stages of cognitive development the sensory motor stage is associated with concerns about social issues imitation memory and mental representation ability to solve problems in logical fashion ability to interpret and analyze options कौन आंसर सर रहिबो पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा जतबेले आसिला सेंसरी मोटर स्टेज रे कौन होइना पिलाटी जतबेले बापा बाहर को जाउथांती तांको इमिटेट करे बुझी पाले तो निश्चय इमिटेशन ऑप्शन जोटी आसिला त आपण तक इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि According to Kohlberg, a teacher can instill moral values in children by giving strict instructions on how to behave, giving importance to religious teaching, nahi hobani, laying clear rules of behaviors, involving them in discussion on moral issues. देखो सब बेले कही पिला एक्टिवली पार्टिसिपेट करथियो सेही ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहइबा नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 32 रो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर रहइबा नेक्स्ट देखिबा Vygotsky's theory implies कौन implies करे after initial explanation do not support a child in solving difficult questions child will learn based the company of children having IQ lesser than his or own collaborating problem solving and individual assignment to each student निश्चित रूप से पिला जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवो कोलैबोरेटिव एकाठी हेकरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को करिवो सेही ही से कहिसेंती निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर होबा A teacher wishes to help her students to appreciate multiple views of situation. She provides her students multiple opportunities to debate on the situation in different groups. According to Vygotsky perspective, her student will dash various views and develop multiple perspectives of the situation on their own. Rationalize, internalize, construct or operationalize. According to Vygotsky perspective, her student will पिला कौन करिवो ना इंटरनलाइज करिवो नेक्स्ट ए क्वेश्चन कौन अछि Sita has learned to eat rice and dal with her husband. When she is given dal and rice, she mixes rice and dal and start eating.
she has dash eating rice and all into her schema of doing things. देखंतु से कौन करिवो ना assimilate करिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अछि. Which of the following is based on Vygotsky's socio-cultural theory? Operant conditioning, reciprocal teaching, culture neutral cognitive development, and insight learning. Which of the following is based on Vygotsky's socio-cultural theory? सेटा होची कोन ना reciprocal teaching. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि. A teacher says to her class as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively. All students should complete assignments prescribed without any assistance. She is referred to which of the following stages of Kohlberg's moral development? Conventional stage 4, law and order. Post conventional stage 5, social construct. Pre conventional stage 1, punishment avoidance. Pre conventional stage 2, individualism and exchange. देखंतु जेतेबेले क्या कथा आसुची कोलबर्ग कथा आसुची सोशल कॉन्ट्रैक्ट कथा आसुची सोसाइटी कथा आसुची तो निश्चित रूप से आपण मानकर आंसर कौन माने पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 5 और सोशल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन अछि. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय कौन 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 सपोर्ट करे ना ऑप्शन कौन अछि. कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिफाइंड टेस्ट. नेक्स्ट कौन अछि. नेक्स्ट अच्छी कौन टेस्ट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल. प्रिजर्विंग activities that reinforce traditional methods. Providing a rich and varied environment. Focusing more on individual activities in comparison to collaboration. देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या सपोर्ट करे ना पिला को गोटे हेल्दी बा रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट दिए. तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखिए. इन Vygotsky's theory which aspect of development gets neglected? Social, cultural, biological ना linguistic. सोसाइटी भितर जदि आपण सोशल भी रहिबो कल्चरल भी रहिबो लैंग्वेज कथा भी रहिबो. Vygotsky theory किए नेग्लेक्ट हुए ना बायोलॉजिकल कांसेप्ट. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि. Ria doesn't agree with Rishabh about setting of a class picnic. She thinks that the rules can be revised to suit the majority. This kind of peer disagreement according to Piaget refers to कहा को रेफर करती ना heteronomous morality ना cognitive immaturity ना reaction ना morality of cooperation. देखो जैसे का सहित एग्री करूनी तार कथा तो तार कोऑपरेशन नहोनी तार अलग संग मान सहित तो निश्चित रूप से मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन रहबो. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि. Which of the following stages are involved when infants think with their eyes, ears and hands? कौन कौन ऑप्शन अछि. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर एंड फॉर्मल ऑपरेशन. आपण जानि थिबे सेंसरी मोटर स्टेज रे ही एटा हुए. नेक्स्ट देखियो कोन अछि. The teacher noticed that Pushpa cannot solve a problem on her own. However, she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called कौन ना lateralization ना pre-operational thinking ना zone of proximal development ना scaffolding. आपटा जानि थिबे scaffolding कथा. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि. Fitting new information into existing schemas is known as. एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम रे भी आसीची. Accommodation ना equilibration ना assimilation ना organization. Assimilation ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखिबा. According to Piaget's theory, which one out of following will not influence cognitive development? Language, social experiences, maturation, activity. देखंतु सोशल एक्सपीरियंस टा कहार आसे ना कोलबर्ग का कांसेप्ट रे आसे सॉरी Vygotsky का कांसेप्ट रे आसे तो निश्चित रूप एठा ही अलगा रहिबो. पचारची कोन विल नॉट. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि. इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी which level signifies the absence of morality in the true sense? Level 3, level 4, level 1 na level 2.
निश्चित रूप से मोरालिटी ट्रू सेंस कथा लेवल 1 नहीं आसे. नेक्स्ट देखिबा. According to the pre-conventional level of Kohlberg's theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? Personal needs and desires, individual values, family expectations, na potential punishment involved. कोथरे इंडिविजुअल टर्न करे मेकिंग ए मोरल डिसीजन ना कोन पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्वड ऑप्शन सहित से जाने जे मते जदि पनिशमेंट मिलुची देन मु नेक्स्ट टाइम से काम करि परिबिनी तो निश्चित रूप से ता भितर कोन हबो ना गोटे मोरल डिसीजन जागी उठिबो. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि. Which one of the following statements about children would Vygotsky agree with? Children learn when they are offered lucrative rewards. Children's thinking can be understood by conducting laboratory experiments on animals. Children are born evil and need to be controlled through punishment. Children learn through interaction with peers and adults. कोटा भाइगोट्स्की राजी हमें आप भाइगोट्स्की कौन जी भी हूँ ना कहीं सब बड़े ऑप्शन देखिए पिला कोठी इंटरैक्ट करुच्ची सही ऑप्शन ही करेक्ट रहिबो. नेक्स्ट देखिबा. When adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child from current level to performance to potential level of performance, current level of performance to potential level of performance, it is called कौन कहा जाए? Scaffolding ना participatory learning ना collaborative learning ना proximal development. पिला को टिक्की हेल्प करिवे कौन? Scaffolding. नेक्स्ट देखिबा. According to Piaget, a child between 2 to 7 years in the stage of cognitive development. को स्टेज ता था 2 ରୁ 7 वर्ष. फॉर्मल ना कंक्रीट ना सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल. कौन रे आपनकर क्वेश्चन कौन आंसर कौन रहिबो? पियाजी को कहवा कथा अनुसार गोटे पिला को जिते बड़े 2 ରୁ 7 वर्ष होइछि सी ताले को स्टेजेस रे रहिबो? फॉर्मल ऑपरेशनल रे रहिबो ना प्री ऑपरेशनल रे रहिबो ना कंक्रीट ऑपरेशनल ना सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल? निश्चित रूप से 2 ରୁ 7 वर्ष रे पिलाटी कोड थाए ना प्री ऑपरेशनल स्टेजेस रे थाए. नेक्स्ट देखिबा. The process of changing the existing schemas to include new information is called कौन कहा जाए? एटा आगुर भी कही assimilation. नेक्स्ट देखिबा. Dash views children as active builders of knowledge and little scientists who construct their own theories of world. Skinner, Pavlov, Jung ना Piaget? एको के active builder knowledge के कही ना Piaget ही कही. नेक्स्ट देखिबा. Which one of the following is correctly matched pair? Concrete operational child is able to conserve and classify. Formal operational child imitation begins imaginary play. Infancy applies logic and is able to infer. Pre-operational child deductive thought. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे ही पिलाटी कौन करे ना कंजर्व करे नॉलेज को एंड क्लासिफाई करे. तो निश्चित ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर होगा. बाकी 8 एगुरिका जेतिक जिनिस देइछि कोन से जिनिस ए स्टेजेस रे से करेनी. अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश. अमाउंट और काइंड, साइज और करेक्टनेस, काइंड एंड अमाउंट, साइज एंड टाइप. कौन कौन ऑप्शन अछि? अमाउंट एंड काइंड, size and correctness, kind and amount, size and type. Differs in kind from adults than in amount. Option number 3 correct answer. Next देखिबा. Which one of the following is an example of scaffolding? Giving prompts and cues and asking questions at critical junctures, giving motivational lectures to students, offering explanation without encouraging questions, offering both material and non-material rewards. पिला टिके खाली चिंगारी दबा कथा पाठ पढ़िया हेल्प करिया कथा
तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, children learn when reinforcement is offered by maturation, by imitation, by interacting with adults and peers। सब बेले कही जिते पिलाटी एक्टिव लर्निंग करिवो सेतेबेले ही शिखिबो, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिबा, Kohlberg has given the stages of cognitive development, the stages of physical development, the stages of emotional and moral, which one of the correct? Kohlberg कौन देते को स्टेज को डेवलपमेंट स्टेजेस कहते सोसाइटल मोरल वैल्यूज, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 4 सहित आम जा। कोलबर्ग कहार देते ना मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस को देते, Vygotsky कहार देते ना सोसाइटल। अकॉर्डिंग टू लेव Vygotsky, the primary cause of cognitive development is social interaction, adjustment of mental schemas, stimulus response pairing, equilibration। Vygotsky कथा जिते बड़े आसे तो आम क्या कथा मन पकौ ना सोशल इंटरेक्शन कथा गोटे सोसाइटी कथा आम मन पकौ। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिए, in the context of Kohlberg's stages of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? Your parents will be proud of you if you honest, so you should be honest। Social contract orientation, good girl good boy orientation, law and order orientation, punishment obedience orientation। जदि तुम्हें जड़े भल पिला हम तुम बापा माँ तुम गर्व करेंगे, तो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन सहित आम जा। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन अच्छे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, reinforcement by teachers and parents, active exploration of the environment by the learner। सब मुझे जी भी कहू पिला जो एक्टिव कथा शिखुव एक्टिवली कौन हो ना शिक्षण कार्य सहित मिसिकी थी, तो सही जगह पिला भल शिख। नेक्स्ट देखिए, ए 5-year-old गर्ल टॉक्स टू हरसेल्फ व्हाइल ट्राइंग टू फोल्ड ए टी शर्ट। को ऑप्शन सहित आम जा? ऑप्शन देखिए कौन कौन अच्छी, which of the following statements is correct in the context of the girl behavior displayed by the girl? Jean Piaget would explain this as egocentric speech, while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. Jean Piaget would explain this as social interaction, while Lev Vygotsky would explain this as an exploration. Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as a child's attempt to imitate her mother. Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as egocentric nature of the child's thought। पिला जो ड्रेस पिंधुची, सॉरी से ड्रेस को कौन करुच्ची ना फोल्ड करुच्ची, से निज सहित निजे कथा होची। कथा या अछि 5 वर्षर गोटे पिला, तो आप भल कि जानते जीन पियाजेट कौन कर एक्सप्लेन कर इगोसेंट्रिक स्पीच, व्हाइल लेव Vygotsky वुड एक्सप्लेन दिस एन चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शन इन प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर रहिबा। ये तो थिला लेव Vygotsky, जीन पियाजेट एंड लॉरेंस कोलबर्ग कर किछिटा तांको तथ्य को नहीं आधारित होइतिबा किछिटा एमसीक्यूज। निश्चित रूप आशा करती आपण माने यार आंसर्स देई परिथिबे। एंड जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लागे ताले वीडियो को लाइक करंतु, अन्य मानक सहित शेयर करंतु, आउ चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी आसंता काली आपण मानक पई एई सीडीपी कैटेगरी